Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to day 18 of PWA Ramadan Kids Series. Today, Qirat will be presented by Syed Muhammad Affaz. Qirat with translation by Zoya Farheen. A beautiful hamd by Muhammad Rayyan and a speech by Zaina Ebrahim on the topic Laylatul Qadr, the night of power. لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Perish the hands of Abu Lahab and perish he. His wealth or his gain will not help him. He will be burnt in the fire of blazing flame. His wife, the carrier of firewood, he will tie a rope of palm fiber around his neck. Sadaqallahul Aliyyul Azim. तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं. या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना. हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम, हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम. ये लबैक का नारा लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं. या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना. लिपट कर गले लपके मैं मुल्तज़म से, लिपट कर गले लपके मैं मुल्तज़म से. गुनाहों के धब्बे मिटाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं. या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना. मैं लेता रहूं बोसाए संगे अज़वत, मैं लेता रहूं बोसाए संगे अज़वत. यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं. या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना. मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म. लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं. या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना. The month of Ramadan is the most special of times for the Ummah. It extols the virtues of sacrifice, patience, discipline, and gives us countless opportunities to seek mercy and forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and to seek His blessings in this life and the year after.
In this month, one night in particular is more precious than any other nights. What is a night of power? This is a night in which Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala talks about the significance of this night in the Laylatul Qadr surah in Quran, and when he says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. It's the greatest night, the night of power, the night of destiny. Allah subhanahu wa ta'ala chose this night to be the night in which He delivered the message to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibreel alaihi wasallam. It's the night in which a Muslim is awake and he worships Allah. Then they have the reward of worshipping for 1,000 months, which is a whole lifespan, 83 years. It's the night when our destiny is written for the next year. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to pitch a tent in the masjid and completely spend the entire night in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. When is Laylatul Qadr? In Ramadan, it's one of the last 10 nights and probably one of the odd nights. It's kind of a secret. So that's why the wisdom of that is that people will worship Allah all 10 nights. What are the things to do in these special nights? Stand in prayer, recite the Quran, do lots of dhikr, observe ittikaf, make lots of du'as, and give charity. The last 10 days are accompanied by a beautiful dua that is to be recited numerous number of times. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. I would like to conclude my speech with a dua. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to invoke His forgiveness and mercy on this special night, and may He accept our duas and grant the blessings of Laylatul Qadr. Ameen ya Rabbul Alameen. Jazakallah khairan kaseera.